Hello and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket, and maybe not the kind of cricket we were expecting today, gentlemen. Thank you for joining me. Delhi have huffed and puffed their way to 2 precious points over Kolkata, their second win over Kolkata in this tournament, but both teams looked anything but convincing today, sadly. Was it a slow pitch or a poor application at times? This is for both gentlemen. I'll start with you, Wasim. Well, I don't think it was a slow surface टेस्ट में मुझे लगा कि पिच तो ठीक ठाक थी. I think it played really well. But बहुत मुझे लगा दोनों ही टीमों ने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली. Starting with KKR, they obviously didn't have the great start. That shot from Aaron Finch, wasn't very convincing just at the first over. और उसके बाद में, I mean, at 83 for 6, you expect कि other teams, will try and hold them out for 120 or 110. Then Rishabh Pant doesn't bowl Kuldeep Yadav. He doesn't bowl Chetan Sakaria and brings on Lalit Yadav. So that was, a little surprising from him. कि उनको मुझे लगता है कि 20-25 रन ज्यादा बनाने दे दिया. Allowed him to come into the game. And then again, जिस तरह से दिल्ली ने बैटिंग की, they'll be, won't be very pleased the way they went about the business. But they'll be happy. At least, they won the game. If not convincingly, but at least they've got 2 points. But for KKR, it looked like, the campaign looks like all but over for them. Yeah, done and dusted, unfortunately. Nikhil, आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हो इस गेम के बारे में? देखिए, कई चीजें. एक तो ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कलकत्ता का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा. आज कप्तान के बल्ले से 40-42 रन निकले. मैं खुश हूं कि नीतीश राणा उस जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की, अपनी मैच्योरिटी दिखाई, वो टेम्परामेंट दिखाया, आज अर्धशतक बनाया. आई वाज वेरी हैप्पी. बट कलकत्ता दिक्कत में क्यों है? उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 19 चेंजेस कर दिए अपने प्लेइंग 11 में, एंड टॉप ऑर्डर में चेंजेस. नीतीश राणा इतने मुकाबलों में 3 नंबर पे भी बैटिंग की, 4 नंबर पे भी की, 5 पे भी की. आज उन्होंने 6 नंबर पे उनको बैटिंग करने भेजा. फिर एक जब सम्मानजनक स्कोर हो गया, पहले तो आपने 11, वो 5वां गेंदबाज कौन था कलकत्ता के लिए? क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश राणा 1 ओवर डालेंगे, वेंकटेश अय्यर 1 ओवर डालेंगे, फिर 2 ओवर आप आंड्रे रसल से करा लेंगे? सो ये वो टीमें नहीं है कि आप स्कोर को मतलब आप रोक सकते हैं. सो वो प्लानिंग ही गड़बड़ा रही है. नीतीश राणा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि 57 रन बनाए. आई एम सो हैप्पी कि वो गेम को चला के कम से कम आगे तक लेके गए. ही गेव द बॉलर समथिंग टू फाइट फॉर. एंड श्रेयस अय्यर के वो 42, डेविड वार्नर वंस अगेन होल्डिंग हिज ओन, 42 रन उन्होंने बनाए. रोवमन पाल के वो 33 नाबाद, अक्षर पटेल के 24. ऐसा लगा जब अक्षर रन आउट हुए तो वो गेम में वापसी कर सकते हैं. सो कलकत्ता की खुद अपनी दिक्कतें हैं जो वो सेल्फ गोल करते आए हैं कि 5वां गेंदबाज आप नहीं खिला रहे. उसके बाद जो शॉट सिलेक्शन था, आई एम अ लिटिल सरप्राइज विद फिंच के शॉट सिलेक्शन को लेके. एंड यू लुक एट द बैटिंग ऑर्डर. वेंकटेश अय्यर को आपने पीछे नंबर 6 पे खिलाना स्टार्ट किया, अब आप उनको ओपन कराने को देख रहे हैं. Just goes to show that you're not showing confidence in your own guys. इतने फेर बदल आप करते रहेंगे, वो आपकी दिक्कतें जो है ना वो और बड़ी करते चलेंगे. रिंकू सिंह आप वो बतौर बैट्समैन खिला रहे हैं. रिंकू सिंह को आपने इतना नीचे रखा हुआ है. सो ऑब्वियसली ये जब इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, सो इट जस्ट गोज टू शो दैट ऑल इज नॉट वेल इन दैट थिंक टैंक. The think tank is having either too many ideas floating around and they're looking to listen to everybody. वो clear cut strategy नहीं नजर आ रही, and that's an issue for them. I think so. I agree with you, क्योंकि जब मैंने भी मैच देखा था अभी बीच में यही सवाल था कि ये बैटिंग लाइनअप चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है. There's a lot of changes and obviously, if it's not broken, why fix it? But it is broken. And the changes should be slightly strategic. I'm not convinced. Wasim, I think we're all a bit gobsmacked ना ये game देखने के बाद, because these are 2 very good teams. Like, this is not a joke. It's the IPL. So what is amiss? Well, first of all, KKR की तरफ से तो करिश्मा, there's not many things that is going their way. जैसे निखिल ने बताया, the only positives you can say is कि नीतीश राणा ने रन बनाए थोड़े. Captain Shreyas Iyer ने थोड़े रन बनाए. Rinku Singh stitched the partnership along with Nitish Rana, gave them a respectable total, if at all.
And then Umesh Yadav, the way he bowled again, थोड़ा बहुत वो पुराने लय में नजर आए. He gave them the perfect start कि पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया. But उसके अलावा, I mean, this was the pitch where I think they needed Varun Chakravarti. तो वरुण चक्रवर्ती का जो फॉर्म है, that has definitely let them down. क्योंकि इस तरह की पिच पे you need second spinner. तो वहां पर वो उनको ड्रॉप करना पड़ गया. एंड देन अगेन यू मेड सो मेनी चेंजेस, योर ओपनर्स आर नॉट फायरिंग. उसके बाद आपका कीपर आपको नहीं पता है, कभी आप बिलिंग से खेलते हो, कभी आप शेल्डन को खेलते हो, आज इंद्रजीत से खिलाया. तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दैट शोज इन द टेबल वेयर दे आर स्टैंडिंग. जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वेंकटेश अय्यर, दे स्टार्टेड हिम विद ओपनिंग, ब्रॉट हिम डाउन टू नंबर 6. नाउ अगेन दे आर ट्राइंग, बट वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. तो आई थिंक आज की मैच में तो एक्चुअली करिश्मा ऐसा लग रहा है कि कौन टीम ज्यादा खराब खेली है. दोनों ही टीम खराब खेली है, बट ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा खराब कौन खेला है. बट even for Delhi, for that matter, if they keep on playing like that, I don't see them, not reaching far. क्योंकि they were lucky कि it was KKR let them, get away with the game. But अच्छी टीम मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से दोबारा मौका देगी इस तरह से वापसी करने की. They were lucky. They should have restricted KKR to 120 at max, 130 के आसपास, but not bowling Kuldeep Yadav, not bowling Chetan Sakaria, and allowing them to get that 20 plus because it could have easily backfired. So, very surprising the way, this game panned out, but at least Delhi will be happy, they've reached to the, 2 points, so thoda aage बढ़े. Well, one man, Nikhil, जिसने काफी अच्छा खेला है and was very brilliant today, वो था कुलदीप. He had them on a string and it was quite a spell. और वो जरूरी था करिश्मा. जी. वो दिल पे चोट लगी हुई वो गेंदबाज है. इसी सीजन में जो पहला मैच भी खेले थे तो 4 विकेट उन्होंने निकाले थे, और आज भी देखिए वो 3 ओवर में 14 रन देके 4 विकेट, 8 डॉट बोले. शायद अगर चौथा ओवर डालते तो एक और विकेट वो मिल सकती थी, वो 5 का पंच होता उनका. बट nevertheless, 2 games against Kolkata this season, he's got 8 wickets, so that's just incredible. So I mean, that is something that you mean कि you want to put your best foot forward against your previous team. और ऐसे ही कुछ नजर आया. And he bowled with a lot of fire, the zip. It just goes to show if you can take care of your own players, वो mindset का issue है. इसी टीम में यही गेंदबाज पिछले साल था, आपने उनको शायद अच्छे से नहीं ट्रीट किया जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करना चाहते थे, वो मैन मैनेजमेंट. नहीं तो इतना कंट्रास्टिंग डिफरेंस. वो हर बारी विकेट लेते हैं. एंड वी स्पोक अबाउट दिस, वो ऋषभ की तरफ जाते हैं कि कप्तान ने उनके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस फूकी है कि वो बड़े दिल के साथ गेंदबाजी कर रहा है. एंड वो नजर आ रहा है मैदान में. ही इज बीन एबल टू पिक विकेट्स. सो kudos to the Delhi Capitals, how they've handled Kuldeep Yadav. Absolutely. लेकिन Kuldeep wasn't the only Yadav who was the star with the ball. Umesh too kept right, Wasim? बिल्कुल. आई थिंक ही बोल्ड अगेन. मुझे ऐसा लगा कि जो पुराना उमेश यादव जो एट द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल वो डाल रहे थे, आई थिंक ही गेव देम द परफेक्ट स्टार्ट. पृथ्वी शॉ को पहले बॉल पे आउट किया. अगेन ही बोल्ड मोर देन 2 overs of dot balls, 13 dot balls there, 3 wickets, with the न्यू बॉल. बहुत बड़े विकेट निकाले. डेविड वार्नर को आउट किया, पृथ्वी शॉ को आउट किया. So I think he was the bright spot अगर हम bowling की बात करें. Even though Sunil Narayan, was economical, but at that stage you needed wickets, and Umesh Yadav did, gave them wickets. But again, उनको दूसरी तरफ से support नहीं मिला. करिश्मा ना ही टीम सऊदी से, and then obviously उनके पास फिर bowler भी नहीं था. So he was kind of handicapped. But अगर शायद वरुण चक्रवर्ती अच्छे फॉर्म में होते और शायद खेल रहे होते, you never know. The outcome could have been different if Varun was in form and playing. Fair enough. Paul, नहीं sorry. जी सॉरी करिश्मा, वो कैलकुलेशन देखिए विपक्षी टीम भी किस तरीके से कैलकुलेट करती है. मैं श्रेयस अय्यर का आखिरी ओवर तो मैं बात ही नहीं कर रहा. नीतीश राणा ने 1 ओवर डाला, आंड्रे रसल ने 1 ओवर डाला, वेंकटेश अय्यर ने वो 1 ओवर डाला, और वो 3 ओवर में 42 रन आए. और ये चीज जब भी वो 2.5 मिनट का वो ब्रेक होता है, आपको अंदर जाने का मौका मिलता है, व्हेन यू लुक टू स्ट्रेटेजाइज, तो एज ए बैटिंग यूनिट आपको पता होता है कि ये 5वां गेंदबाज तो इस टीम के पास नजर ही नहीं आ रहा
कि आप इनके मेन बॉलर को इतना छोटे गेम में मेन बॉलर को आप आराम से निकाल सकते हो। सुनील नारायण को विकेट मत दीजिएगा, उमेश यादव का आप ओवर निकाल दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, आपको कोई ना कोई बीच में आएगा। और वही हुआ, 3 ओवर में 42 रन बना दिए, आपने मैच एक तरफ कर दिया। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गॉट टू बी एबल टू पिक बॉलर इन दीस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस कि वो आपको 5 और बॉलर आपको कम से कम रन तो रोक के देगा या विकेट निकाल के देगा। So I think these calculation mistakes have been very big and very surprising कि कलकत्ता अमूमन इस किस्म की गलती नहीं करते। नहीं बिल्कुल, I think Delhi also seems to have this very strange obsession with the Lalit Yadav, and that's also a little confusing even for me, and I'm sure for both of you. Let's talk about Powell. Important that he stayed there. या उसका कारण ये था क्योंकि उस समय नीतीश राणा और रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे, दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे थे। तो कप्तान की सोच यही थी कि मैं एक ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी करा लेता हूं, तो वहां या विकेट मिल जाएगी या रन नहीं जाएंगे। बट ही मेड अ मिस्टेक कि आपने अपने एक ऐसे बॉलर को उनका वो चौथा ओवर नहीं कराया जो ऑलरेडी 4 विकेट निकाल चुका था। Fair enough. Fair enough. I think they were only 83 for 6 at that time, right? बिल्कुल। Okay, so next is Powell. Important that he stayed there and got the job done tonight, and that is what he did, Wasim. बिल्कुल बहुत समझदारी के साथ बल्लेबाजी करी, और वो जैसे कैलकुलेशन की बात की है ना निखिल ने, बिल्कुल वो कैलकुलेशन एक बैट्समैन के दिमाग में होता है कि इनके पास फिर बॉलर नहीं, अगर ये गेम बिल्कुल नेक टू नेक आ भी गया तो 19वां ओवर कौन डालेगा, 20वां ओवर कौन डालेगा, एंड ऑब्वियसली ये बैट्समैन के दिमाग में होता है। यू नो, इफ यू लुक एट हिज स्टैट, 16 बॉल 33, 3 टावरिंग सिक्सेस, यू नो, स्ट्राइक रेट इज मोर देन 200। तो और वो उन्होंने दिखाया थोड़े लास्ट पिछले मैच से, जो उनको फॉर्म आया है, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, इज जस्ट कैरिड ऑन फ्रॉम देयर। और दिल्ली के लिए मुझे लगता है ये एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि आपके 2 ओपनर रन बना रहे हैं, ऋषभ पंत के रन नहीं लग रहे हैं, मिचेल मार्श के रन नहीं लग रहे, बट एटलीस्ट देयर इज समबडी, ललित यादव हो गए, रोहमन पावल, एटलीस्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग, थोड़ा बहुत अक्षर पटेल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज होगी। बट द अदर गाइस, जो हमने पहले भी बात की थी कि मिचेल मार्श नीड टू स्टैंड अप, ऋषभ पंत नीड टू स्टैंड अप, तो वो करना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है इस टूर्नामेंट में, तो आप सिर्फ ये 2-3 लोगों के भरोसे नहीं चल सकते, आपके जो टॉप 4 है उनको बैटिंग करनी होगी। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है सोशल ट्रैकर का। लेट्स सी व्हाट एवरीवन हैज टू से। लेट्स टेक अ लुक एट द sky247.net presents the social tracker. So the first one we have is this catch by Pant, which was this catch by Pant the turning point, and he made this catch look very easy, but it was really low and quite difficult. बिल्कुल, आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था, इतना लो। उसके अलावा वो बॉटम एज था, ऐसा नहीं कि वो आउटसाइड एज था, और वो बॉटम एज वाले कैचेस करिश्मा बहुत मुश्किल होते हैं, और खास करके जब आप कट करने जाते हो, तो यू नो, सुपर एफर्ट फ्रॉम ऋषभ। और उसके बाद में जो दूसरा हैराकारी की, वो की एंड्रे रसल ने, जो उसके बाद में आके जो शॉट मारा उन्होंने सेकंड बॉल पे, यू नो, यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एंड्रे रसल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इवन दो यू नो आई मिस्ड आउट टॉकिंग अबाउट इट। आप इतने बड़े प्लेयर से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते करिश्मा के, यू नो, ऑन द सेकंड बॉल, खास करके उस बॉलर के सामने जिसको आप पढ़ नहीं पाते हो कि वो चाइनामैन कर रहा है या फिर वो गूगली कर रहा है, and then you step out and you try and, you know, hit him out of the park and gets out at that crucial stage where they were 83 for 6. So that was very well done to Rishabh. But I think Andre Russell actually, you know, brought Delhi into the game. Had he played that over out, I think things would have been much different for KKR. But I think it was Pant who asked him to change side, Kuldeep to change sides, I believe. जी हाँ, उससे पहले ओवर द स्टंप डाल रहे थे, आई थिंक देन ही केम राउंड द स्टंप एंड वहां से आके ही बोल्ड अ गुगली, so that was very well done from both Rishabh and from Kuldeep also. Okay, next tweet. The love is blossoming. This is obviously Chahal, Kuldeep, champion with a heart, and that's quite cute. And the last tweet is Kuldeep Yadav not finishing his quota will be one of the biggest mysteries this season. 4 wickets in 3 overs. This is by Akash Chopra.
I ये think this all हाँ sums up, the 3 tweets sum up the games. करेक्ट, ये हम सब दंग रह गए थे, बट वही एक कारण था कि दो लेफ्ट हैंडर्स हैं कि मैं ललित यादव को करवा लेता हूँ विकेट, वो निकाल देंगे या रन नहीं पड़ेंगे। जो आखिरी ओवर तीसरा ओवर उन्होंने डाला था उसमें वो 14-15 रन गए थे। सो समटाइम्स आई गेस वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, बट एट दैट मोमेंट इन टाइम वो निर्णय लेना जरूरी था। एंड यू वुड ऑब्वियसली बैक द बॉलर जो विकेट्स उस गेम में निकाल रहा हो। सो यू नो आई एम अ लिटिल सरप्राइज, नहीं कराया, बट अच्छी चीज ये, आई एम हैप्पी फॉर कुलदीप दैट ही इज अमंग्स विकेट्स। आई थिंक हमने क्रिकेट ट्रैकर के ऊपर ही डाला था, पिछले 2 सीजन में 1 विकेट निकाली थी, लेकिन अब 8 मुकाबलों में, इससे पहले वो 15 विकेट निकाल चुके हैं। सो ही इज वन ऑफ द टॉप few wicket takers is this season. So incredible. So you know, I'm glad that he's making a comeback, and he's making a very strong case to come back and play for India once again. And both actually Kuldeep and Kuldeep and Chahal, Kulcha are back actually. You know, Spicy they kulcha. Spicy Kulcha, they are back in IPL, and how they are back, you know, with big bang. Well, we all love a bit of kulcha. Let's take a look at where they all stand right now on our numbers tracker. So Delhi have moved to the 6th position. I'm sure they're feeling quite happy about that. And Kolkata, well, very difficult and looking quite grim for them. And then we have Well, the I top think मुझे ऐसा wicket लगता है करिश्मा के it's gone down to 7 team tournament now. I think last 3 have gone. It's between the 7 teams now. तो ये 7 में से 4 आने वाले हैं. And Kuldeep is also giving Chahal a run for his money right now in the most wickets. And no surprises, एक टाइम पे ये दोनों बॉलर्स इंडिया के लिए जब बॉलिंग करते थे सफेद बॉल की क्रिकेट में, these were our go to guys. यही आपको मैचेस जिताते थे। आपको वो याद होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जब हम हारे थे, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पाकिस्तान के खिलाफ वो फाइनल हारे थे। उसके बाद से ये तय हुआ था कि हम फिंगर स्पिनर से नहीं खिलाएंगे, दोनों तरफ से रिस्ट स्पिनर लेके आएंगे। एंड दे वर द क्विकेस्ट टू 50 और 100 विकेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद से थोड़ा सा फॉर्म लड़खड़ाया, वो जोड़ी टूटी, बट आई एम ग्लैड टू सी बोथ ऑफ देम बैक इन द गेम टुगेदर। और अच्छे टाइम पे ये इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ एक श्रृंखला है, एशिया कप है, विश्व कप है, और विश्व कप ऐसी जगह है जहां पे रिस्ट स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। सो यू नो इट्स गुड टू सी। Absolutely, it is good to see. Let's talk about tomorrow's game. We have Lucknow versus Punjab. ये काफी interesting game होगा, and I'm looking forward to it. And I think we have a little thing that's meant to come up now, but it hasn't come. So let's briefly talk about the game. There's so much for live. Okay, so well, it'll be a good game in terms of you got some of the guys who pack a powerful punch. Liam Livingston है, उधर शिखर धवन अच्छी तरीके से वो रन बना रहे हैं, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, आयुष बुद्धोनी. So this should be a good game to me. And पुणे के, if I'm not wrong, ये पुणे के मैदान में कल मुकाबला है. So you'll get a little value for your shots, but वो पहला स्पेल दोनों इनिंग में फास्ट बॉलर को थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी. जी हाँ, मुझे लगता है कि पंजाब के लिए I think करिश्मा it's such an important game. I think they want to stay in that tournament. They've only got 4 wins out of 8. So I feel you know लखनऊ के लिए maybe थोड़ी सी breathing space है, but पंजाब के लिए I feel it's a must-win game, and they haven't won any back-to-back games. So that is going to be a challenge for them to win two in a row. They've lost 2 in a row, but they've never won 2 in a row. So this is going to be a challenge for them. You know, they win back-to-back games and stay in this tournament. And it'll be interesting to see how KL does against his former side. बिल्कुल बिल्कुल. I think वो तो है ही, ये टूर्नामेंट में ये ट्रेंड चल रहा है, and I think कुलदीप यादव has been the star performer in this. I think दोनों ही गेम में 4-4 विकेट ली थी, दोनों ही गेम दिल्ली ने जीती है. So KL will be upbeat to you know play against his former side. तो अच्छा कड़ा मुकाबला होने वाला है.
बिल्कुल, but we're all professionals here. And on that note, thank you, gentlemen, for joining me. हम कल फिर मिलेंगे 6:30 p.m. IST time, only on Sky247.net presents Not Just Cricket. See you both. Good night and God bless. Thank Thank you. you and good night. See you.